Hello everyone, today we'll study here the disease of the rectum and the anal canal. Rectum and anal canal is the last part of the large intestine. The common disease of the rectum and anal canal is the rectal prolapse, malignancy, hemorrhoids or piles, pilonidal sinuses, anal fissure, fistula in ano, anorectal abscesses, etc. Before today here we will study here hemorrhoids. First of all, we will study the normal anatomy of the anal and rectum and anal canal. And the rectum is a slightly dilated section of the large intestine of about 13 centimeter long. It leads from the sigmoid colon and terminates in the anal canal. It is the distal portion of the large gut and placed between the sigmoid colon above and anal canal below. In front of the last three pieces of the sacrum and coccyx. And the anal canal is the short passage of about 3.8 centimeter long anatomically and 4 centimeter long surgically in normal adults, leads from rectum to the exterior. Just two sphincters, internal sphincter and external sphincter. The internal sphincter consisting of smooth muscles and is under the control of autonomic nervous system, and the external sphincter is formed by skeletal muscle and is under voluntary control. On either side of anal canal is ischiorectal fossa is present. This is also called E-cloak canal. It contains blood vessels, nerve supplies, arteries and veins. Anal canal can divide it into three parts: upper part, which is of 15 mm, middle part also for 15 mm, and lower part is 8 mm, and dentate line, which you can see in this diagram, pectinate line or dentate line. It is the former site of embryonic anal membrane. The lining of the anal canal above this line is columnar epithelium and below is skin. It divides anal canal upper 2/3 of anal canal and lower 1/3 of anal canal. The mucosa above this line has an autonomic nerve supply and below is pudendal nerve. The mucosal lining of the rectum has large number of mucus secreting goblet cells within simple tubular glands, which are not present beyond the junction of the rectum and anal canal. Means जो rectum और anal canal का junction है उसके नीचे mucus secreting goblet cells नहीं होती हैं, वो rectum में ही होती हैं, anal canal में नहीं होती हैं. The lining membrane of anal canal consists of stratified squamous epithelium continuous with the mucous membrane lining of the rectum above and which merges with the skin beyond the external sphincter. In the upper section of the anal canal, the mucous membrane is arranged into 6 to 10 vertical folds, which you can see in this diagram. Anal column forms the anal column, and each column contains a terminal branch of superior rectal artery and vein. And now the blood supply of the rectum and anal canal. The arterial supply mainly by superior inferior mesenteric artery. Superior mesenteric artery supplies cecum, ascending and most of the transverse colon, and inferior mesenteric artery supply remainder of the colon and proximal part of rectum. Middle and inferior rectal arteries are the branches of internal iliac artery which supply distal section of the rectum and anal canal. Venous drainage is mainly by superior and inferior mesenteric veins. Now we will study here piles of hemorrhoids. Hemorrhoid is a Greek word, means blood.
and roof is flowing or oozing. Pile is letting a bath, means dilated plexus of normal hemorrhoid vein in relation to the anus. It is the downward sliding of anal cushions abnormally. Anal cushions are aggregations of arteries, venules, smooth muscles, and elastic connectivity tissue in the submucosa that normally reside in the left lateral, right posterolateral, and right anterolateral anal canal. मीन्स जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं वो नॉर्मली जो रहती हैं वो लेफ्ट लेटरल, राइट पोस्टेरोलेटरल एंड राइट एंटेरोलेटरल में नॉर्मल पोजीशन होती है. जब वहाँ से डायलेट होके वो डिसेंड करते हैं, दैट इज डाउनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ द क्वेश्चन is called hemorrhoids. Or presently the present concept is the weakening of Park's ligament. Park ligament is the most important structure nowadays. This is the lower ligament. This found in the lower end of the external sphincter. This is the main reason of the anal incontinence. अगर ये डायसेक्ट होता है ऑपरेशन के टाइम तो इससे एनल इनकंटिनेंस हो जाती है. सो पार्क लिगामेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर. Now the types of piles are first of all थ्री टाइप्स एनाटॉमिकली पोजीशन होती है. तो थ्री टाइप से होती है: इंटरनल हेमराइड्स, एक्सटर्नल हेमराइड्स एंड इंटेरो एक्सटर्नल हेमराइड. इंटरनल हेमराइड्स होते हैं अबव डेंटेट लाइन, जो हमने देखी थी डेंटेट और पैक्टिनेट लाइन, उससे जो अबव होते हैं वो इंटरनल हेमराइड्स होते हैं एंड कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन. एक्सटर्नल हेमराइड्स होते हैं सिचुएटेड below the dentate line and covered with skin. and internal external hemorrhoids दोनों ही वैरायटी के होते हैं, जो इंटरनल भी होते हैं एंड एक्सटर्नल भी होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स होके. एंड by location it is of two types: primary hemorrhoids and secondary hemorrhoid. प्राइमरी हेमराइड्स जो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं थ्री पोजीशन पे होते हैं: 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock. दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द आर्टरीज एंड वेन. दैट मीन्स लेफ्ट लेटरल, right posterolateral and right anterolateral. That is 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock. This is the primary site of the hemorrhoids. That's why this is called primary hemorrhoids. And the secondary hemorrhoids, one which occurs between the primary sites. This is secondary hemorrhoids. And the third is according to prolapse is this is of 4 types: first degree, second degree, third degree and fourth degree. first degree piles होते हैं जो अंदर ही रहते हैं, piles within and only bleeds, जो सिर्फ अंदर रहते हैं और सिर्फ ब्लीड करते हैं. सेकेंड डिग्री होते हैं जो डेफिकेशन के टाइम बाहर प्रोट्रूड हो जाते हैं बट स्पॉन्टेनियसली रिटर्न बैक टू एनल कैनाल. एंड थर्ड होते हैं जो प्रोट्रूड होते हैं ड्यूरिंग डेफिकेशन एंड रिप्लेस्ड मैनुअली. एंड फोर्थ डिग्री पाइल्स आर परमानेंटली प्रोलैप्स्ड पाइल्स. नाउ द etiologies, the main causes of the primary hemorrhoids. The primary cause of primary hemorrhoid first is the standing position, prolonged standing position, which particularly responsible for pile because blood flow against gravity. Anatomical factors में the veins passing through the submucosa of the rectum are constricted due to act of defecation, absence of wall or congenital weakness of vein wall, constipation causes excessive straining at micturition in stricture urethra,
diarrhea, HERDS to low fiber diet, idiopathic and hereditary. And the causes of secondary hemorrhoids are carcinoma of rectum, or by blocking of vein produces back pressure from secondary hemorrhoids, portal hypertension, and pregnancy due to the compression or superior rectal vein, or due to hormones which relaxes smooth muscles of the vein. In pregnancy, mainly due to the effect of progesterone. In some cases, it is idiopathic, which we cannot find out any of cause. And now the clinical features. The prevalence rate of piles is 4.4% in the world, in about 10 million of people. It occurs at any age, mostly between the age of 30 to 65 years of either equal in both sexes. The bleeding is the first symptom, that is splash of in the pan, bright red color blood during defecation. मास पर एनम अनीमिया प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी फीचर है ये. ज़्यादा ब्लड लॉस होने से अनीमिया हो जाता है, डिस्चार्ज होगा म्यूकॉइड डिस्चार्ज, एंड इन्फेक्शन होगा तो प्रोराइटिस हो जाएगी. पेन may be due to prolapse, infection or spasm. On inspection, prolapsed pile will be visualized. On PR examination, only thrombosed pile can be felt. By proctoscopy, exact position can be find out as bulge in the proctoscope. इन्वेस्टिगेशन में हम प्रॉक्टोस्कोपी कर सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी, कॉलोनोस्कोपी. सिग्मोइडोस्कोपी एंड कॉलोनोस्कोपी हम मेलिग्नेंसी अगर सस्पेक्टेड हो तब करते हैं, एंड बेरियम एनीमा एक्सरे भी करते हैं अगर हमें कोई सस्पिशन वहाँ पर मेलिग्नेंसी लगती है तो. नॉर्मली तो डिजिटल एग्जामिनेशन एंड प्रॉक्टोस्कोपी इज एडवाइजेबल. ड्यूरिंग प्रॉक्टोस्कोपी दिस पॉइंट शुड बी नोटेड: द नंबर एंड डिग्री एंड साइज of the pile mass, the surface and appearance of piles, features, chronicity of the prolapse. One should look for the rectal lesions such as external tags, anal papillae, fissures and proctitis. डिफरेंशियल डायग्नोस में इसके कार्सिनोमा, रेक्टल प्रोलैप्स एंड पेरियनल वार्ड्स. इन्वेस्टिगेशंस मैंने बताई दी. इसमें हेमेटोक्रेट भी हम करा लेते हैं ताकि इसका हेमेटोलॉजिकली हमें पता रहे कि अनीमिक है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, इन्फेक्शियस है या नहीं. इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जैसे सुपुरेशन, थ्रोम्बोसिस, गैंग्रीन, स्ट्रेंगुलेशन, अल्सरेशन हो सकती है, फाइब्रोसिस, पायमिया, स्टेनोसिस और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी हो सकती है इसमें. एंड नाउ कम्स द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. फर्स्ट इज प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट है, मोर लिक्विड डाइट, लैक्सेटिव, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी है. मेन रीज़न ऑफ पाइल्स यहाँ पर कॉन्स्टिपेटेड भी होता है पेशेंट. इसमें इसका ट्रीटमेंट 3 टाइप से करते हैं. पहले मेडिसिनल, पैरासर्जिकल एंड देन सर्जिकल. मेडिसिनल में आता है कि पेशेंट को लैक्सेटिव देने हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है तो, और लोकल एप्लीकेशन में देते हैं जैसे ज़ाइलोकेन जेली अगर वहाँ पर पिन परसिस्ट कर रहा है तो. सिट्स बाद देते हैं 15 to 20 minutes, 2 to 3 times a day. Avoid straining, more fiber diet and more liquid diet. Dressing with normal saline अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है तो. You can also see here the degree of piles. Now the मेडिकल के बाद पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट इज क्रायोथेरेपी, बेंडिंग, क्रायोथेरेपी, इंफ्रारेड कोगुलेशन, लेजर थेरेपी, डेप्लर गाइडेड हेमोरेट्रल आर्टरी लाइगेशन और DGHA
and surgical is open hemorrhectomy, closed hemorrhectomy, stapled hemorrhectomy, and anal stretching or Lord's dilatation. First is parasurgical में sclerosant injection therapy. In this injection of sclerosant, submucosal injection is given with an irritating solution which creates a tissue reaction that results in sclerosis. Its indication in first degree and early second degree internal pile, and contraindication is thrombosed or prolapsed piles, proctitis, fissure in ano fistula in ano pregnancy and diabetes mellitus में नहीं देते हैं. Common solution is used is Albright solution, which is 5% phenol in arachis oil with camphor 2 gram in 1 ounce, or 5% phenol in almond oil. Then the procedure of injection of sclerosant is इसमें Gabriel syringe use होती है. This is specific syringe for this injection filled with sclerosant solution. इसमें जो हेमराइड है उसके मास उसको हम क्लैंप से पकड़ते हैं और just above the anorectal ring 3.5 ml of solution is injected into the main mass of each hemorrhoid in submucosa. The injection should produce elevation and pallor of mucosa, and there is necrotic zone formation. There is slight transient bleeding from the puncture point, and the injection is painless, but a dull ache is common for few hours. Complication इसमें होती हैं, रिकरेंस हो सकती है 15% केसेस में, हाइपोकॉन्ड्रिक पेन हो सकता है, टिनिसमस हो सकता है. टिनिसमस इज रिकरेंट इंक्लिनेशन टू एवैक्यूएट द बाउल. म्यूकस स्लफिंग हो सकती है, अल्सरेशन, म्यूकोजल एब्सेस रेयर केसेस में हो सकती है. सेकेंड वन इज बैरन बैंड लाइगेशन, which this is the picture of barren band or rubber band. Like its indication is second degree internal hemorrhoids. Contraindication is fissure in ano fistula in ano proctitis, और dysenteric infection अगर है तो हम रबर बैंड डायलेशन नहीं करते हैं. इसमें जो ये प्रोप है इसमें लिकोटोमी पोजीशन में पेशेंट होता है, एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है बैरन बैंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसमें, उसके ऊपर रबर बैंड लगी होती है जो इसमें ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही है. दिस इज द रबर बैंड, एंड इससे सक करते हैं पाइल को एंड देन लाइगेट द बैंड विद प्रेसिव ट्रिगर. इसमें यूजुअली 2 बैंड्स यूज होते हैं और बैंड प्लेस किया जाता है 2 सेंटीमीटर अबव द डेंटेड लाइन, एंड जैसे टिश्यू स्लफिंग हो जाती है 1 to 2 वीक्स में, लीविंग एंड अल्सर विच हील्स ए स्कारिंग. दिस प्रोसीजर इज यूजुअली पेनलेस अगर ये प्रॉपरली किया गया हो. तो इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं हेमरेज, सीवियर पेन if a band applied too low or too many piles have been banded at once, thrombosis and ulceration. Next is the cryosurgery. इसमें गैस यूज होती है, क्रायोप्रॉप यूज होता है, और इसकी स्पेसिफिक इंडिकेशन होती है कि एक सीटिंग में हम सभी पाइल्स को क्रायोसर्जरी से निकाल सकते हैं. इसमें गैस यूज होती है नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गोन गैस, लिक्विड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रोजन. जनरली नाइट्रस ऑक्साइड यूज करते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एडिक्वेट फ्रीजिंग फॉर क्रायोसर्जिकल हेमरेक्टोमी. अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं तो इसकी थोड़े कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहती हैं. इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है
और मतलब बहुत ज़्यादा लो होता है, -180 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये एकदम से मतलब फ्रीज कर देता है। इसके लिए जो क्रायोप्रोप यूज़ होता है उसको बार बार थॉइंग की ज़रूरत होती है, मतलब उसको हीट करना पड़ता है, अदरवाइज वो फ्रीज हो जाता है। इसमें पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में लेटाते हैं, और मतलब ये जो हमारा क्रायोप्रोब है, इस पर आप इससे देख सकते हैं, इसमें मतलब मीटर लगा होता है, मैं कितने प्रेशर से मतलब कंटिन्यूस इस पे प्रेशर से ही आपको एक ही प्रेशर यूज़ करना होता है, और 20 to 30 सेकंड पे मतलब पाइल्स को पहले क्लैंप से पकड़ के उसके जो पेडिकल होता है वहाँ पर उसको क्रायो सर्जरी से फ्रीज करके, और मतलब ये कोल्ड बर्न आप इसको बोल सकते हैं, इसे फ्रीज हो जाता है और निकाल देते हैं फिर से। ओनली सिर्फ 20 to 30 सेकंड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करें तो उसके फ्रॉक को निकालने के लिए फिर से डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा और वार्म करना पड़ता है, इसलिए हम नाइट्रस ऑक्साइड गैस ही प्रेफरेबली यूज़ करते हैं। It is a relatively painless procedure and can be done in OPD basis, सिंपल, सेफ एंड लेस ब्लीडिंग। इसकी डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि प्रोफ्यूज वाटर डिस्चार्ज करता है पोस्ट ऑपरेटिवली, इचिंग होती है, पेन, अगर नॉर्मल स्किन फ्रोज हो जाए तो पेनफुल हो जाएगा, मार्क्ड एडिमा हो जाता है, एडजस्टेंट स्किन में इनकंटिनेंस ओकेजनली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ इंफ्रारेड कोगुलेशन थेरेपी। इसमें जो हीट से बर्न किया जाता है पाइल को, ताकि ये बर्न होके निकल जाएगी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री पाइल में इसको यूज़ करते हैं। इसमें हाइड्रोजन लैम्प यूज़ होता है, विच इज़ अ सोर्स ऑफ रे, एंड हैंड हेल्ड एप्लीकेटर होता है।